गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। हमने कल लास्ट टॉपिक क्या किया था? कल किया था लास्ट सिस्टम वाले था कुछ शायद वो किया था डायथर्मिक के बाद वाले कोर प्रोसेस किया था। दो प्रोसेस खत्म कर लिया। हाँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, राइट। ओके, मैम वो एक बार वो आप क्या करो? वो लास्ट वाला जो आपने लिखवाया था ना प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस था हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसमें मैंने क्या लिखवाया था? द प्रोसेस हैपन्स वेरी स्लोली। मतलब कि क्वासी स्टैटिक वो प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा स्लो चलता है। हमें देखने में ये लगता है कि वो प्रोसेस रुका हुआ है, मींस इतना स्लो वो चलता है प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, अब इसके बाद कहते हैं आफ्टर डूइंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस करने के बाद बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, हम उसकी बात करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हीट के बारे में, जिसे हम Q से डिनोट करेंगे, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में, जिसे हम W से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर के बारे में T, प्रेशर के बारे में P, वॉल्यूम के बारे में कैपिटल V, देन एंथैल्पी दैट इज H से डिनोट करते हैं इसको, देन इंटरनल एनर्जी जिसे हम U से डिनोट करते हैं, एंड देन गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, एंड लास्ट इज एंट्रोपी दैट इज कैपिटल S। तो इन सब चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इन सब चीजों में यहां तक इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, and these two are the second law of thermodynamics. ओके, तो ये सब चीजें हमने पढ़नी है, और ये सारी चीजें दे आर ऑल ट्रीटेड एज मैथमेटिकल फंक्शन। ये सब एक फंक्शनल चीजें हैं, मैथमेटिकल चीजें होती हैं ये सारी की सारी। तो बेसिकली इस चैप्टर में थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो हमने बोला कि ये सारी चीजें फंक्शन पर डिपेंड करती हैं। तो फंक्शंस क्या हैं और कितने टाइप्स के हैं हमारे पास, अब वो बात करते हैं। रेज कर दूं? यस मैम। These functions can be of two types. These functions can be of two types. First is state function and second is path function. State function and path function. तो फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन नाम से क्या पता लग रहा है ना, कि जो प्रोसेस हो रहा है पाथ डिपेंडेंट। सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, प्रोसेस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कौन से रास्ते से? आप घर से यहाँ पढ़ने आते हो, लेकिन घर से यहाँ पढ़ने का एक ही रास्ता नहीं है,
ठीक है, यहां पहुंचने के अलग अलग रास्ते होंगे ना, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, पाथ फंक्शन, कितने वेज होते हैं उस प्रोसेस को करने के लिए, राइट? सो यू कैन राइट those function which are path dependent on way that state has been achieved are called path function. ठीक है, जिस रास्ते में जहां हमने पहुंचना है उसका जो रास्ता है, that is called path function. You can say the example distance. घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर किया, that is path. So उसे कहते हैं path function. Clear? Second, state function. Those function or parameter which depends only on initial state and final state only, and not on the way of carrying out the experiment. Are called state function. Example, displacement. राइट, बात समझ में आई? क्या कह रहा है ये बेसिकली? पाथ फंक्शन डिस्टेंस के बारे में, कि जो पाथ हमने फॉलो करना है. दोज फंक्शन which depends only on initial state और final state, जहां से शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है, घर और इंस्टीट्यूट, सिर्फ इनकी बात कर रहा है. जिस पाथ से वो जा रहे हैं उनसे उसका कोई मतलब नहीं है. दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की ही वो बात कर रहा है. क्लियर? मेरा पेन नहीं चल रहा. आगे अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इंटरनल एनर्जी यू से भी डिनोट करते हैं और ई से भी डिनोट करते हैं. इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? सभी एनर्जीज का सम. मतलब कि एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वेव एनर्जी, नॉइज एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जीज होती हैं, सभी एनर्जीज का सम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. द सम total of all components of energy due to internal factors of a system
is called internal energy. So the internal energy, मेरा पेन नहीं चल रहा आज. The internal energy of a system can be changed by two modes, that is heat and work. Internal energy बेसिकली दो सिस्टम्स को चेंज करती है, दो मोड्स को चेंज करती है, हीट एंड वर्क. तो हम पढ़ेंगे हीट के बारे में और वर्क के बारे में. फर्स्ट इज हीट. हीट क्या है? हमें पता है हीट क्या है. हीट एक एनर्जी ट्रांसफर है जो टेम्परेचर से होता है. हीट इज अ energy transfer due to temperature difference between system and surrounding. So heat is a energy transfer due to temperature difference between system and surroundings. Work. वर्क क्या है? वर्क क्या है? जो हम काम कर रहे हैं वो वर्क है, राइट? तो बेसिकली वर्क क्या है? राइट डाउन द इंटरनल एनर्जी the internal energy of a system, write down the internal energy of a system can also be changed by applying external pressure. The internal energy of a system can also be changed by applying external pressure on weightless piston and compress the gas. फिर गैस को कंप्रेस कर दे, हम दबा दें तो वो पिस्टन हिल जाएगा, जिससे वर्क होगा कि हमने कुछ काम किया. So in this process the piston moves inside, piston अंदर चला गया, and the molecules which collide with it gain energy. जो molecules थे अंदर उसमें आपस में collision हो गई, and the molecules which collide with it gain energy and thus transferring the energy to the gas and increase the internal energy of the system. इससे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और इसी मोड को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन. क्लियर? सागर बाकी ना मैं कल ही कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरा पेन नहीं चल रहा प्रॉपरली, ये वर्क नहीं कर रहा बच्चा. ठीक है? ओके मैम, मैं कल करती हूँ.